Well, welcome back to Game on Hay. To today's games, two very important games to every one of those teams. As ever, we've been talking about Afghanistan, who are taking on Namibia. So let's turn our attention now to Namibia. It's been a good story for them. They've come through the qualifying rounds. They beat Scotland, of course, in dramatic fashion in their first game in the group stages. And they would love to cause an upset if they can. On paper, of course, they would be weaker, but they do have some very interesting players. And we can talk about those now. So if we look at the strength of this Namibian side, I mean, the one name that leaps at you is David Wiese, who's been around the leagues. He's come out of South Africa, connections in Namibia, so he's playing for them now. But he's the name that everyone would recognise. Yes, and because of the impact on the team, because he can have an impact with the bat, he can have an impact with the ball, and he can have impact from his leadership. And that's why he's such an important player for Namibia. This is one of his innings in this tournament, 50-odd runs. And what's really impressive is that he comes at a point when there's a lot of pressure and he can finish the match also. So that's the most important thing about him. Well, the important thing about having someone like him in the side is that, as I say, he's got all this experience of the franchise leagues. He's played a lot of cricket over the years. He's got himself to a stage where he is a bit of an icon, especially for Namibia. Yeah, and he's someone they can look up to. So I mean, when we were talking about raw talent just now with Afghanistan, well, Namibia have a little bit less of that, but they have spirit. Yes. And of course, they need someone to look up to, someone just to guide that spirit. Yes, and that motivation also. We were talking about players needing a motivation, so it's an extra factor because no one knew Namibia before, I mean, in the cricketing world, and they have that extra motivation to put Namibia on the map. But for instance, ask the guys, I mean, he's been part of PSL, we've seen a lot of him in this country. तो आपने जो देखा डेविड वीसा के बारे में अब तक, क्या आप समझते हैं उनका कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस टीम के लिए? सबसे बड़ा रोल तो लाहौर कलंदर का है कि उन्होंने हम उर्दू से स्टार्ट करे थे ना, अभी 12 नहीं बजे तो वो नहीं मैं तो ये बता रहा हूँ कि इन लोगों का बड़ा किरदार है इनको, क्योंकि आईपीएल जरूर खेले लेकिन सक्सेस नहीं मिली, सीपीएल खेले, लेकिन पाकिस्तान में जब खेले लाहौर से तो जब भी मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया, तो उसमें साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का बहुत अमल दखल है इस टीम के अंदर. जिस तरह अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, क्योंकि बॉर्डर मिलते जुलते हैं, तो इसलिए जल्दी वो टीम ऊपर आई. तो इस टीम का भी है कि थोड़ी सी सपोर्ट अगर इनको साउथ अफ्रीका से मिल गई ना, क्योंकि वहाँ के प्लेयर कॉल पैक की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेट करेंगे क्रिकेटर, तो ये टीम भी अफ़गानिस्तान की तरह लग रही है कि फ्यूचर में ये बड़ी अच्छी टीम बनने वाली है. क्योंकि जिस तरह से ये लास्ट 3-4 गेम खेले हैं, एक डिसिप्लिन, प्रोफेशनल और लिमिटेड रिसोर्सेज में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है. ये छोटा मोटा काम नहीं है कि आपने नीदरलैंड को बाहर कर दिया, आपने आयरलैंड को बाहर कर दिया और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं. सबसे मेन थिंग है जो खेलने का स्टाइल है वो लोगों को पसंद आ रहा है. बिल्कुल, और इनका विन लॉस रेशो भी बड़ा ज़बरदस्त है. जो कुछ अरसे में जितने मैचेस खेले हैं उसमें ज़्यादातर मैचेस जीते हैं ये लोग. बिल्कुल, आई थिंक इन्होंने जिस तरह क्वालिफाइंग राउंड में जिस तरह स्टार्ट किया, फिर ये सुपर 12 में जिस तरह इन्होंने स्कॉटलैंड को हरा दिया, तो इनके लिए एक स्टोरी देता है. और इनमें है कैपेबिलिटी, जिस तरह डेविड ने कहा कि इनके पास इतनी ज़्यादा प्लेयर्स तो नहीं हैं, लेकिन ये है जो भी है उनके पास. जिस तरह इनका कैप्टन है एरास्मस, काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है. फिर वीज़े की जो हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वो एक रोल मॉडल है पूरी टीम के लिए, एक मोटिवेशनल है. जिस तरह वो फ्रंट से परफॉर्म कर रहे हैं, द वे ही इज़ प्लेइंग ऑल ओवर द डिफरेंट लीग्स, तो आई थिंक वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. उसके साथ है इनमें पोटेंशियल है, क्योंकि एक यूनिट खेल ले, एक स्पिरिट के साथ खेल ले. जिस तरह लास्ट मैच में फ्रंट से उनके ट्रम्पलमैन ने परफॉर्म किया, साथ में वो जो फ्रेलिंक है, जिस तरह वो कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहा है, अपने लाइन से डिसिप्लिन के साथ बॉल कर रहा है. दूसरा जो है उनका जो जे स्मिथ है, आप नहीं कह सकते कि वो इतना अच्छा ऑलराउंडर है, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको जो नामीबिया की टीम है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. तो आई थिंक ओवरऑल आप अगर देखें तो अच्छे डिसिप्लिन के साथ खेले कि यूनिट के साथ खेल रहे. So one point is that how Afghanistan has really rapidly improved because it was closer to Pakistan and they could travel and get a lot of information through Pakistan also. Similar is the case with Namibia and South Africa also. A lot of players are there, the coaching staff they have got, so their growth is quite rapid. And apart from David Wiese, they are also talking about Erasmus, and we do have a package, and then I'll hand it over to the English panel.
Okay, so I think there is a bit of time before we can go we there. can get to that. You're right. I mean, Visa himself comes from Rudaport, which is just outside Johannesburg. So true South African, but with all the right connections to play for Namibia. A couple of others like Trumperman, I think J.J. Smith. There's a couple of others who came out of South Africa. But that's, again, we've discussed this in relevance to other countries, haven't we? You know, okay. The countries who are winning very easily. If you want, okay, we have a few born in South Africa playing for England. We've made that point. We understand that point. But the point with Namibia is, of course, they need to develop. They need these players to give them strength, give them a bit of strength, and I have nothing against that. Well, to begin, let's start with Wisa. He's an international star of such, and when it comes to T20 franchises around the world, and you do need individuals who can make a difference in your team. Sometimes you pick guys, and just because of the names before, or the names that they would have had, sometimes never quite delivered. But as we can see from David Wisa, I'm a fan, really. Just seeing the things that he would have achieved. We heard Sana speak earlier, the fact that he comes in at crucial times, and he have delivered every time that he would have come to the party. So you can say that it's a great choice for him to be where he's at, because it would be a wasted talent anyway. So doing his business with Namibia is just fine, I guess, for the Namibians and all who support Namibia's cricket. Namibia. If I ask you this question, though, he's come from South Africa. Yeah, the question is actually, to put it in perspective, would he get in the South African side? Well, I don't know. Maybe if that was the case, I guess he would be there. He would This is be. kind of my point. You know, for instance, you've got the likes of David Miller, one or two others actually, who are playing that same role for South Africa, down the order, able to strike the ball, hit sixes in the last 5 overs, that sort of thing. So actually, it gives you a clue as to the levels. South Africa are, by definition, the stronger side. They have the likes of David Miller. If Wisa has to go to Namibia to get this exposure to play World T20 cricket, well, that's fine. But it means that he's not the superstar. He's just their star. I mean, look, he's a very valuable player. A finisher. Yeah. Like when you're bowling, you need a good depth bowlers, and when you're finishing as batting unit, you need somebody like David Wiese. Give a lot of confidence to the team. Until he's sitting in the dugout, there is always a hope. So I think he should encourage and motivate few more South Africans to join Namibia, as Jordan did, and bring Archer into the England team. To be fair, I think it's in a sense, I can see David's point to a degree, where if these individuals weren't getting chances in their homeland, and they have an opportunity to go other places and become who David Wisa is today, to be fair, it's all good for the game on a global basis. I mean, look, they have wasted so many players like Ingram, Rossop, many more. Abbott, that guy played for us. Telport. Yeah. So I think the ICC have to change a little bit their priorities and how to support and elevate associate cricket. It should be performance-based. If Namibia performed well this year, they got to give them more money, help them develop their structure, because teams are dying. So there has to be more for the teams and the countries to develop their games. And because when you say a world champion, the other footballers and hockey players, Olympians, they always laugh at it. Oh, world champion out of 8 teams or 10 teams. So the more teams, the better. Yeah. Cricket is a small pool when it comes to being recognized around the world, not like soccer and all the other sports. But apparently, though, hang on, I've been reading a couple of times this last couple of weeks that cricket is the second most watched sport in the world. Because of India. Because of there is India, that, Pakistan, sure, Bangladesh, the yeah. population. Yeah. Huge. Good point. Always put it in context. Yep. Always make. It's all very well saying these stats, these facts, so-called facts. Put it in context. That's still good. In terms of Namibia, though, I mean, they've been saying. I mean, I've been reading the last couple of days.
cricket in Namibia has suddenly got a great big boost because of their success in this tournament. So people are starting to talk about it. And of course, the tricky thing is this. It's already all right having a boost for a couple of weeks. But then you've got to make that count for the next few months, the next few years, and build on it. Yeah, and they got this chance because Zimbabwe was not able to come. So it's going to be interesting how they are going to develop. उनके कुछ structures के बारे में आपको अंदाजा है नामीबिया में क्या structures हैं? नहीं, इनका नहीं है, ये तो लकी टीम है क्योंकि जिम्बाब्वे को पॉलिटिकल बेस के ऊपर आईसीसी ने किया क्योंकि करप्शन भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी नज़र आ रही थी जिसकी वजह से उनको पाबंदी लगी है, तो नामीबिया को चांस मिला है। इतनी ज़्यादा नहीं, हम लोग 1-2 मैचेस खेले हैं पास्ट में 2009-10 में, तो उस वक्त इतनी बड़ी टीम नहीं थी। अफगानिस्तान उस वक्त इमर्ज हो रही थी और बड़े आराम से इनको हराती थी। लेकिन इनका ये ज़रूर है कि क्लोज टू मतलब कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं और इस इवेंट से इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आकिब की बात बिल्कुल ठीक है, आईसीसी को इस तरह करना चाहिए कि जो टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको फिर उनका बजट जो है ना वो मेन हेड से मैं आईसीसी अलग से इनको एलोकेट करे, क्योंकि क्रिकेट की ग्रोथ इसमें ही है कि 1 ईयर या 2 साल होते हैं एक टीम के लिए, एसोसिएट मेंबर्स के लिए कि वो ऊपर आ रहे होते हैं। लाइक 2003 में केनिया आई थी जैसे, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गई, उसको सपोर्ट नहीं मिली, वहाँ पे सपोर्ट मिलना ज़रूरी थी। आयरलैंड आई थी 2007 में, लेकिन वो सपोर्ट आईसीसी से नहीं मिली। एक ज़माने में बांग्लादेश आई, उसको सपोर्ट मिल गई, 1999 में सपोर्ट मिली, तो वो टीम कहाँ से? उसकी वजह ये है अशरफुल हक थे, डालमिया थे और पाकिस्तान से आरिफ अली खान अब्बासी थे, तो वो एशियन ब्लॉक बनाना चाहते थे और वहाँ से बांग्लादेश आई और वो एक क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ। इसी वजह से एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो काम किया, यहाँ की 5 टीम खेल रही हैं, तो इसलिए यूरोप में भी ये करना चाहिए, अफ्रीका में कि क्रिकेट की ग्रोथ अलग अलग करनी चाहिए। सिर्फ आईसीसी जो देख रहा है उनके लिए ज़रा मुश्किलात हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी बात है राशिद भाई, जिस तरह डेविड ने कहा कि उनकी जो विन की वजह से नामीबिया में क्रिकेट की बातें शुरू हो गई और मे बी इट विल टेक अ मंथ और 2 मंथ और आफ्टर दैट मे बी कि वो फिर नीचे जाना शुरू, तो इसमें मेरे ख्याल से आईसीसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह वो एसोसिएट टीमों को वो क्वालिफाइंग राउंड खिलाते हैं और अगर टीम अच्छा परफॉर्म कर रहे वर्ल्ड कप के मेन राउंड में, तो फिर आईसीसी के वो बनता है कि उनके जो सिस्टम में वो इन्फ्लुएंस करे, उसमें थोड़ा उनके लिए जो कोचिंग स्टाफ है वो ये इनमें हेल्प कर दे, या इसके साथ अगर करीब करीब जो कंट्रीज जिस तरह लेट सपोज साउथ अफ्रीका है, मे बी इन फ्यूचर उनके जो कोचिंग स्टाफ है या कोई और सिस्टम में बेहतरी लाने के इन्फ्लुएंस साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स की भी होगी, और मे बी जिस तरह के हालात साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में जा रही है अब रिसेंट पास में जो हुआ उसके साथ डिको के साथ, इन फ्यूचर में भी काफ़ी प्लेयर उधर चले जाए और पॉसिबिलिटी है कि नामीबिया की क्रिकेट ऊपर आ जाए। Yeah, so with this participation in the World Cup, they might need a holistic approach to keep the cricket standards up, with some support from the ICC, some support from the regional cricket also, like the Asian Cricket Council in Asia is supporting a lot of the Asian nations. So I guess that would be the way forward. Indeed. Okay, well, lots of good ideas. In terms of their strength today, they're led by Erasmus, who has made a 50 in the tournament. He is one of those guys that has a lot on his plate, simply because when you're leading a side that is simply, in basic terms, not as strong as the opposition that you're likely to meet, you like to set the example, you like to make the runs you can at the top of the order. He's got talent, he's got some good shots here, actually. If you look at these shots, these are quality shots. And it's just that little thing, isn't it? Sometimes you've got, depends who you're playing against. And that's what happens when you start to meet the big nations. It depends who you're playing against. Suddenly the bowling is better, suddenly the fielding is better, suddenly the batting is better against you. So it just makes the job, by definition, harder. What I think is important, we saw that particular match where Erasmus was going against Holland. It is nice for you to accomplish that, make sure that you take care of that side of things. That, in my opinion, creates confidence for you to move forward. And let's see what happens today, because it's going to be a good match, and I believe for some reason that they may come up against a team that may have too much substance for them today. Well, the big worry about today's confrontation is this, surely, that, I mean, for instance, if you take the Scotland game against Afghanistan, the whole thing, the game as a game, was ruined by the fact that 2 very good spinners picked up, 9 wickets between them in a hurry. They're gonna face. They have never even
seen in their systems. Well, yeah, Mujib and Rashid. There will be a lot of confusion Here up we go. there. Okay. All together now. All together, please. Okay. Who bowls the best? Come on, come on, come on. Join in. You can all join in. We can all do this. We can all play this. This thing. That's it. We got it. Good. Okay. So Mujib is the key because they performed against Ireland, Netherlands, simple, medium pace, nothing unusual. So, I mean, 3 spinners, man, 12 overs, and that I think is too much asked from this young Namibian team. So that's the key. That's the difference. It is. Isn't it? I mean, when you see something special against you and you've not seen it before, because this is what we talked about the other day, it is having the time or the luck or whatever it might be to get through that little bit that gives you a clue about it. And if it's all over in a hurry, of course, then that's the game gone. Yes, and I think that's the credit to the Afghanistan spinners. They are brilliant and they have been consistent. They have the skill and they have delivered it consistently, and that's why this reputation of them all around the world. And Namibia will have their hands full with these spinners. Okay, spin has been important, and in fact we're going to have a bit of a chat about spin, I think, at length tomorrow. But spin has been really important in this tournament. But at the same time, one of the other outstanding features has been the number of quick left armers who've got the ball to swing, picked up wickets early, and Namibia have one of their own in Ruben Trumpelman. रूबन ट्रम्पलमैन आपने उमर जिक्र किया, उनकी हमारे पास एक पैकेज भी मौजूद है. उनकी बॉलिंग के बारे में क्या आपको पसंद, क्या चीज़ आपको पसंद आई एज ए फास्ट बॉलर? देखिए, जब भी एज अ बॉलर जब मैं किसी दूसरे बॉलर को देखता हूँ तो उसका देखता हूँ, रन अप उसका देखता हूँ, उसके फॉलो थ्रू वगैरह, हाई आर्म एक्शन है ज़बरदस्त, उसके जो 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 जिस तरह वो सीम को हिट कर रहा है, पाम बिहाइंड द सीम, तो मेरे ख्याल से वो कंप्लीट एक वो उसमें एक अच्छे बॉलर बनने की वो तमाम सलाहियत जो अर्ली ऑन जब हम कोई बॉलर हमारे सामने आता है और हमको देखते हैं, उसका रन अप देखते हैं, उसका गैदर देखते हैं, फिर फॉलो थ्रू डिलीवरिंग, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ कंप्लीट. जिस तरह उसने उसको अर्ली ऑन स्विंग मिलता है जस्ट बिकॉज वो सीम को हिट करता है. क्या हम ट्रम्पलमैन को साथ देख भी अगर सकें तो बहुत अच्छा होगा जब उमर डिस्कस कर रहे हैं. जी प्लीज़ आप कंटिन्यू करें. तो आई थिंक जिस तरह लास्ट मैच में उसने जो बॉल किए कंडीशन को बड़ा ज़बरदस्त वो उसने यूटिलाइज़ किया है, और आई होप सो कि वो उसी चीज़ को आज कंटिन्यू रखे. लेकिन ओवरऑल एक अच्छा है नामीबियन टीम के लिए इन फ्यूचर. वो जितने भी वहाँ पे जो अपकमिंग्स है, ऑब्वियसली आपको एक रोल मॉडल होना चाहिए हर टीम में, तो आई थिंक एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है नामीबियन टीम के लिए. कितना इम्पोर्टेंट होगा राशिद भाई स्टार्ट करना इनका अफगानिस्तान की ऊपर से नए बॉल से विकेट लेना है? अफगानिस्तान को जो इशू नज़र आता है, जो हिस्ट्री है इनकी चेजिंग में, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने चेज नहीं करना चाहा, हालांकि इतना अच्छा टॉस जीत के, तो इनका जो इशू है बॉलिंग जैसे भी हो, 3 बॉलर्स इनके पास हैं, लेकिन 140 प्लस अगर कर देता नामीबिया तो इनके लिए चेजिंग में इश्यूज आते हैं. आप छक्के या चौके मार के यहाँ पे इतने आराम से मैच जीत नहीं सकते. यहाँ पे 2-3 विकेट्स गिरती हैं इनकी, वो बहुत बड़ा इशू है, और हिस्ट्री इनकी है. ये जीतते भी ऐसा नहीं है, जैसे मैंने मिसाल दी, एक मैच में कोई आउट ही नहीं हुआ, मारना शुरू हो गया, दूसरी टीम बैकफुट पे आ गई है. लेकिन इनका जो मेन जो इशू नज़र आ रहा है वो है, बाकी जो बॉलर की बात की, ट्रम्पलमैन की बात आपने की है, स्विंग अच्छा है, उसकी रिस्ट पोजीशन जैसे उमर ने बताई, लेकिन ये एयर में बॉल को ये सीम ज़्यादा स्विंग ज़्यादा की है इन्होंने, ट्राई की बॉल को जितनी लेंथ आगे होगी आगे लेके जाएंगे, तो स्विंग से इन्होंने आउट किया है. ये देखें ज़बरदस्त बॉलिंग की है. ये वाइट बॉल से रात में शाम को बॉल थोड़ी बहुत मूवमेंट मिली, उन्होंने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया. ये बहुत ज़बरदस्त जिस तरह से उन्होंने जी बिल्कुल नहीं ठीक है, वो ये हर लेफ्टी का ये ड्रीम बॉल होता है कि राइटी को आप अंदर लेके आते हैं, जिस तरह वो एलबी किया, तो आई थिंक ये ड्रीम बॉल है हर बॉलर्स का. और ये स्टार्ट किया शाहीन ने इस वर्ल्ड कप में. जी हमारी भी ड्रीम्स पूरी की हैं, और हमारे कबीर खान एक होते थे, वो वेपन था इनका पाकिस्तान में, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा स्विंग करने में ये इनके जो अफगानिस्तान के भी कोच हैं और हमारे भी कोच उनका था ही है कि उतनी स्विंग करते थे. अरे उसमें देखो एक जो द मोस्ट वैल्यूएबल बॉलर्स इन दिस वर्ल्ड कप विद द न्यू बॉल स्पेशली, देयर आर मिचेल स्टार्क, शाहीन शाफरीदी, ट्रेंट बोल्ट. They are very effective with the new ball, and it's blessing if you have somebody like this. And Imad Wasim. And I would say
After 3 outstanding international bowlers, I think number 4 is Ruben Trumpelman. Yeah. So if you have bowler like him, you always have a hope that if you took 2-3 early wickets, you are in the game. The game changer at the start. आकिब अगर तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ जाए जैसे अफगानिस्तान का रजा ही है 2-3 छक्के मारे फिर क्या होगा? देखो उसका राइट हैंड बैट्समैन डिफरेंट लेफ्ट हैंड बैट्समैन क्रॉस जाता है ना, still have a chance. Wicket to wicket, don't give him width, but wicket to wicket from the off stump moving away. अब There's वही always a बेहतर है chance कि for उसी Ajit. तरफ खेले जो आज लास्ट क्वेश्चन रात का मैच है स्विंग मिली उनको अभी डे का मैच है अगर स्विंग नहीं मिली ट्रबल होगी देखो ये डिपेंड फिर करता है कि जो नया बॉल है और जो नई पिच शुरू होगी इसके ऊपर आज 2 मैच होने हैं एक अबू धाबी में एक है और दुबई तो उसमें नए बॉल से फर्स्ट 2 ओवर्स तो आपको अगर आप थोड़ा सा आगे पिच करें तो आपको जरूर मिलेगा और मे भी कई दफा थोड़ा मॉइस्चर मिल गया तो डेफिनेटली शहजाद के लिए तो मुश्किल डाल सकते हैं लेकिन अभी तक जितने भी जो मैचेस हुए ना इवन अबू धाबी के अगर आप उसकी हिस्ट्री भी देख के रिसेंटली भी जो मैचेस हुए पास में भी हुए अर्ली ऑन उसमें मॉइस्चर होता है बॉल ग्रिप करता है अगर आपने देखा होगा इस वर्ल्ड कप में स्पिनर को काफ़ी हेल्प मिलते हैं कि वो उनका बॉल जो है ना ग्रिप होता है जस्ट बिकॉज ऑफ के उसके अंदर सरफेस उसका ड्राई होता है लेकिन अंदर उसमें पानी होता है मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से बॉल ग्रिप करता है और अर्ली ऑन जो है ना सीम करता है जिस तरह आपने कहा कि लेफ्टी अगर आ जाए तो उसने अगर लास्ट जो मंजे को आउट किया था ना वो स्विंग नहीं हुआ था लेकिन उधर से उसका वो बॉल ऑफ स्टंप और फोर्थ स्टंप पे सीधा रह गया जिसकी वजह से इनसाइड जो कि वो बोल्ड हो गया बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है पर हम विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक पर हमें इस वक्त एक ब्रेक लेना होगा ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात